Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. My name is Hira Tarani and today in this video we'll be talking about clause, phrase and a sentence and what are the basic types of it. In the previous video I have talked about the basic difference between what is a difference between a clause and a phrase and how clause differs from a sentence. So in this video I'll be talking about the basic types of it, so let's begin. So the two basic types of clauses are dependent and independent. We'll be discussing this later on. Types of phrases includes verb phrase, prepositional phrase, noun or pronoun phrase and many more. So the types of sentences are declarative sentence, imperative, exclamatory and interrogative sentence. Now, the basic difference between the types of sentences and the structure of a sentence is that we have simple sentence, compound complex, and complex sentence. Now, there's massive difference between the types of sentences and the structure of a sentence. So, let's begin with this phenomena. Starting off with the phrase. Let's begin with the definition and then the types of phrases and the difference between a phrase and a clause. So, let's begin. The basic and the foremost definition of a phrase is that it gives an incomplete sentence simply. मुझे बहुत ज़्यादा सजेशंस आई थी कि मैं उर्दू में बोलूँ, तो ठीक है, हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन उर्दू में करेंगे आज. फ्रेज़ जो है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस देता है या सेंस देता है, ठीक है, इधर सेंस है या आइडिया, इनकम्प्लीट आइडिया होता है. It can start with the prepositions. If I say that on the wall, so on the wall would be a preposition phrase because preposition start में use हुआ है on, even though wall जो है हमारे पास noun है. इधर आता है a noun phrase is a group of words that functions as a noun in a sentence. हमारे पास एक एग्जाम्पल है the bright blue car. the जो है determiner है. डिटर्मिनर्स क्या होते हैं ना कि ये आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो जो द है ये डेफिनेट आर्टिकल है. तो द ब्राइट ब्लू कार, तो वी गॉट अ नाउन इन द एंड, कार आ गया, ठीक है. अब जो ब्राइट ब्लू है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इफ़ यू पीपल नो द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, सो इट इज़ डिफाइंड एज इट ऑलवेज कम्स और मॉडिफाइज द नाउन. तो ये पूरा द ब्राइट ब्लू कार जो एक आइडिया है ये नाउन फ्रेज है बिकॉज द इज द डिटर्मिनर और द आर्टिकल, वी गॉट अ नाउन इन द एंड, कार, एंड ब्राइट ब्लू इज मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन विच इज़ अ कार या एडजेक्टिव है वो. तो ये हमारे पास नाउन फ्रेज आ गया द ब्राइट ब्लू कार. सो व्हाट द ब्राइट ब्लू कार, इट इज़ एन इनकम्प्लीट आइडिया और अ सेंस या sentence. ठीक है, I hope you people are getting it. Let's begin with the definition. It includes a noun or a pronoun and may also include determiners like article, demonstrative, possessives. Articles and a and the होता है. Demonstratives जो है this, that, those ये होते हैं, और possessives जो है his, her, mine, ये चीज़ें होती हैं. And adjective and prepositional phrases. A noun by itself does not provide any information about what is being referred to, but adding modifiers to it through a noun phrase can gives us more detail and context. तो noun phrase में simply आपके पास जो noun है वो main thing होगा, और उसके साथ जितने भी modifiers होंगे वो adjective होंगे because adjective हमेशा noun को modify करता है. Now let's begin with another example. My mother's delicious apple pie. My जो है हमारे पास, so it's a pronoun. Mothers जो है mother and apostrophe s, तो it indicates the possessive case. और delicious apple pie, delicious is the modifier and apple pie is definitely noun. ठीक है, तो आप जब एक सेंटेंस को डिफरेंट कट करके उसको enable करेंगे to label it, it would be easy for you guys that is it a prepositional phrase, adjective phrase, a noun phrase, pronoun phrase, adverbial phrase. So इसमें my mother's delicious apple pie, so my is the pronoun and mother is a noun.
delicious is a modifier or the adjective. Apple pie again is a noun. So simply it's a noun phrase. Then the book is on the shelf. Here the is the determiner or the article, also known as definite article. Book is a noun, on the shelf is the prepositional phrase, because prepositions क्या होती है ना कि it indicates or locates the position of a thing. तो book कहाँ पे है, शेल्फ पे है, बट स्टार्टिंग सेंटेंस में द बुक आया है तो इट्स अ नाउन फ्रेज. ठीक है. So the noun book is modified by the prepositional phrase on the shelf. The third example we have is the an interesting article about climate change. So article is a noun and जो है indefinite article है, interesting जो है adjective है, article is a noun, about is the preposition, and simply it's a prepositional phrase about climate change. Let's discuss other examples of a noun phrase. It also includes subject, object, and complements. So let's discuss that. So in a sentence, we have or a noun phrase can function as a subject, object, and complement. For example, the bright blue car is parked in the driveway. अब एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, हमारे पास एक चीज़ है, वो ही ब्राइट ब्लू कार जो कि पार्क की गई है इन द ड्राइव वे. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ कार, दैट वुड बी अ सब्जेक्ट सिंपली. नाउ talking about another example, she gave my mother's delicious apple pie to the guests. तो वी कैन एक्सप्लेन दिस एग्जाम्पल एज उसने मेरी मामा का डिलीशियस एप्पल पाई गेस्ट को दे दिया. तो क्या दे दिया गेस्ट को, इट्स एन ऑब्जेक्ट. हम लोग एप्पल पाई को डिस्कस कर रहे हैं. Now, in the third example, you people would get pretty confused because it talks about complement and complement. Now, there's a massive difference between complement and complement. There are two examples or the spelling difference between the both. COMPLIMENT, ये वाला कॉम्प्लीमेंट आपकी तारीफ़ें होती हैं अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट दे. ठीक है. और दूसरा COMPLEMENT इंडिकेट्स अगर एक चीज़ आप लोगों के साथ अच्छी लग रही है, जैसे कि द शूज़ आर कॉम्प्लीमेंटिंग योर क्लोथ्स, सो वो PLEMENT होगा. और अगर आपको कोई आपकी कोई तारीफ़ करे तो वो PLIMENT होगा. आई होप द confusion would be now clear to you guys. तो अब इधर एक एग्जांपल है, द बुक ऑन द शेल्फ इज़ अ क्लासिक नावल. तो अभी एक बुक है शेल्फ पे, उसको क्लासिक नावल कहा गया है. ये एक कॉम्प्लीमेंट है. वी कैन से दैट ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है कॉम्प्लीमेंट. चलो, इन दी समरी, a noun phrase is the combination of words that work together to provide more information about a noun, including modifiers and prepositional phrases. It serves to clarify and provide context for the noun in a sentence. Simply, noun phrase है हमारे पास the blue sky, the is the determiner, blue is the adjective, and sky is a noun. तो हमारे पास हमेशा नाउन फ्रेज़ में नाउन डोमिनेंट होगा, उसके साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज़ भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज़ भी हो सकता है. सो बेसिकली इट वुड बी अ नाउन फ्रेज़. Talking about another type of a phrase, so it is a verb phrase. A verb phrase is the group of words is a group of words that indicates a main verb and auxiliary. Auxiliary helping verb होता है या linking verb, if any, along with any grammatical elements such as adverbs, prepositions, and objects. It expresses the action and state of being of the subject in a sentence. हमारे पास दो टाइप्स हैं वर्ब के, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. कि सिंपली एक एक्शन डिनोट करता है और एक एक्शन डिनोट नहीं करता. एक के पास ऑब्जेक्ट होता है और एक के पास नहीं होता. कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है एंड इन ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता. सो वर्ब फ्रेज में क्या होगा कि हमारे पास एक मेन वर्ब, एक ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके साथ एडवर्ब भी हो सकता है. इसके साथ हमारे पास प्रपोजिशन होगा if it makes a proper sentence. Now there's an example. She is going to the store. She is a pronoun, is the helping verb, also known as a linking verb or auxiliary. Going to the store. Going is a verb. To
To is a preposition. The is the article or the definite article, and store again is a noun. But here I cannot say that it is a noun phrase, as it indicates a pronoun as well as a noun, which is a store. Because if I put a sentence like this, as a she is to the store, but a going is the main verb. So she is going to the store indicates the whole sense. So she is going to the store would be a वर्ब फ्रेज. अगर हम गोइंग हटा दें तो इस आइडिया में तो कुछ रहेगा ही नहीं. ठीक है. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम. इधर एक काम हो रहा है, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो बेसिकली दिस इज़ अ मीन वर्ब. और इसी तरह दे जो है इसमें हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आ गया. और इसी तरह ये वर्ब फ्रेज होगा. ही शुड हैव स्टडीड हार्डर. अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट स्टडी, so this would be a verb phrase. अभी हमारे पास एक explanation है इनकी. In the first example, the main verb is going and the auxiliary verb is the preposition phrase to the store acts as an adverb. फिर आप लोग further ये explanation पढ़ लें in order to enhance your understanding about verb phrase. इस ये just explanation है in और examples की. So coming towards prepositional phrase. अच्छा, तो प्रपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है कि स्टार्टिंग में प्रपोजिशन यूज़ होता है और एंडिंग में इट वुड एंड विद अ नाउन और अ प्रोनाउन. ठीक है. और इधर एक पार्ट ऑफ स्पीच है जेरांड, जो कि एक नाउन का आईएनजी फॉर्म होता है, तो वो भी उसको जेरांड कहते हैं, तो उससे भी एंड हो सकता है. एंड सिंपली हमारे पास जो prepositional phrase है, it can also act as an adjective or an adverb in a sentence. ठीक है. So examples are, in the morning we like to have coffee. In the morning, in is the preposition or in the morning is the prepositional phrase. Morning हमारे पास adjective है. हमारे पास ये act कर रहा है कि ये as an adverb है because इधर कोई action perform हो रहा है simply. In the second example, the book on the table is mine. Ending, it is ending with a pronoun, और on the table इधर prepositional phrase है. The is the determiner and book is the noun. तो noun, pronoun और बीच में prepositional phrase. She ran to the store hoping to catch the sale. तो इधर to the store जो है वो preposition है. hoping to catch, hoping इधर gerund form है. to catch the sale, to इधर भी हमारे पास preposition है. और इधर talking about catching a sale, तो ये जो है हमारे पास adverb है. तो इसी तरह हमारे पास ये बीच वाला prepositional phrase था. The next we have is the adverbial phrase. Let's begin. एडवर्ब की सिंपल जो डेफिनेशन है, तो एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को या एडजेक्टिव को. ठीक है. तो हमारे पास सिंपली एडवर्बियल फ्रेज में हमारे पास वर्ब होगा और उसका मॉडिफिकेशन में हमारे पास एडवर्ब होगा, तो इट वुड बी एन एडवर्बियल फ्रेज. तो अच्छा, एग्जांपल्स हमारे पास हैं. ही स्पोक वेरी स्लोली. स्पोक हमारे पास वर्ब है, वेरी एंड स्लोली इज़ दी एडवर्ब. और क्योंकि दो वर्ड्स हैं तो वेरी स्लोली वुड बी एडवर्बियल फ्रेज. शी इज़ ऑलवेज ऑन अ टाइम. इधर हमारे पास वर्ब जो है इज़ है, क्योंकि इज़ द लिंकिंग और द हेल्पिंग वर्ब. शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम. ऑलवेज हमारे पास इधर एडवर्ब है और ऑन टाइम हमारे पास ये एडवर्बियल फ्रेज है. तो इधर एडजेक्टिव ऑलवेज हो सकता है. ठीक है. ये एडवर्ब फ्रेज भी है क्योंकि मॉडिफाई कर रहा है, और एडजेक्टिव भी है क्योंकि एडजेक्टिव इसीलिए क्योंकि टाइम को ये मॉडिफाई कर रहा है. शी इज़ ऑलवेज ऑन टाइम. ओके, द थर्ड वी हैव इज़ द ग्रुप डांस्ड वाइडली टू द म्यूजिक. हमारे पास ये जो डांस्ड है तो ये वर्ब है, एंड वाइडली टू द म्यूज़िक इज़ द एडवर्बियल फ्रेज, बिकॉज ये हमारे पास ये जो वर्ड है डांस को ये मॉडिफाई कर रहा है कि अगर एक ग्रुप है वो डांस कर रहा था तो किस तरह डांस कर रहा था, तो वाइडली डांस कर रहा था. ठीक है. So this was all about adverbial phrase. Now let's begin with the topic of the clause. What is the main difference between a phrase and a clause is that clause contains a subject and a verb, whereas a phrase gives an incomplete idea.
हमारे पास सेंटेंस जो है इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, सो देयर इज अ massive difference between a subject and a verb and a subject and a predicate. It contains independent and dependent clause. Independent clause वो होता है जो कि it can stands completely on its own, whereas dependent clause हमारे पास it may depend on other sentences or clauses. ठीक है, these are the two main types and differences between the two clauses. Let's begin with the sentence. Be there are two types of differences ठीक है in a sentence. One is the structure of a sentence and one is the types of sentences. Structure में हमारे पास है simple sentence, compound complex and complex sentence. Simply हमारे पास simple sentence में एक independent clause है, एक ऐसा sentence जो कि अलोन स्टैंड कर सकता है, हमें दूसरा सेंटेंस उसके लिए नहीं चाहिए बिकॉज इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग ऑन इट्स ओन. कंपाउंड सेंटेंस एक वर्ड से ही, कंपाउंड से हमें लग समझ आ जाती है कि हमारे पास दो सेंटेंसेस होंगे या दो क्लॉजेस होंगे. तो कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉजेस होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो कि दे कैन स्टैंड अलोन ऑन इट्स ओन, और हमें और कोई इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं चाहिए होता. तो असल में कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंसेस, लेकिन किस की मदद से? कंजंक्शन की मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शंस. एंड दैट कंजंक्शन इज़ नोन एज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग में एंड बट और ये वाली चीज़ें आ जाती हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल द सन वाज अ सेटिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग और चिर्पिंग. तो इधर द सन वाज सेटिंग, द बर्ड्स वर सिंगिंग, हम ये दोनों सेंटेंसेस ऐसे नहीं लिख सकते इवन दो दे आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. तो हमने इनको कनेक्ट करने के लिए एक कंजंक्शन यूज़ करना है विच वुड बी एंड. टॉकिंग अबाउट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. अब हमारे पास एक ऐसा सिनेरियो जिसमें हम एक सेंटेंस इट वुड स्टैंड अलोन एंड वन वुड बी डिपेंडेंट ऑन दैट इंडिपेंडेंट क्लॉज. अभी हमारे पास इस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे कि ऑल दो इट वॉज रेनिंग आई वेंट फॉर अ वॉक. यू कैन यूज़ दिस independent clause I went for a walk, but you cannot use the other dependent clause on its own by saying although it was raining. Now this gives an incomplete sense. आप किसी को ये नहीं कह सकते कि although it was raining and then you be silent. No, you need to complete your sentence by saying although it was raining I went for a walk, right? तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. The next we have is the compound complex sentence. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास दो ऐसे क्लॉजेस हों जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग दे और एक ऐसा हो जो कि डिपेंड करे उन कंप्लीट क्लॉजेस पे. ठीक है. So the example for compound complex sentences that I went to the movies but my friend stayed home because he was sick and we had planned to see the same film. अब अगर मैं कहूँ and we had planned to see the same film won't give any idea or a complete idea. तो हमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इसके साथ मिला के कंप्लीट सेंस देना है. तो दिस वाज अबाउट द sentence structure. Talking about the types of sentences, so it includes interrogative, imperative, declarative and exclamatory sentences. तो हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं. इंट्रोगेटिव का मतलब है कि इंटेरोगेट करना, टू आस्क क्वेश्चंस और पुट अप अ रिक्वेस्ट सिंपली. डिक्लेरेटिव का मतलब है टू डिक्लेयर फैक्ट्स. इम्पेरेटिव का मतलब है कि आप अगर एक कमांड या वार्निंग, इनविटेशन या इंस्ट्रक्शंस दोगे. एक्सक्लेमेटरी का मतलब है अ सडन फीलिंग और इमोशन दैट राइजेस ड्यू टू हैप्पीनेस, सैडनेस और बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट. जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं वो, उप्स, ओह, वाओ, अलास. अलास हमें जब हम खफा होते हैं या कोई ऐसी सैड न्यूज़ सुनते हैं तो हम वो बोलते हैं हरी आप और हुर्रा वी वन द मैच. तो डिक्लरेटिव में हम लोग यूज़ करते हैं ऐसा फैक्ट्स. देखो, डिक्लरेटिव में हम यूज़ करते हैं एज इफ़ ऐसे फैक्ट्स जो कि एक हमारी डे टू डे लाइफ्स में
होती हैं, जैसे कि व्हाट इफ़ आई वुड बी हैविंग अ हैट एंड आई फॉरगॉट टू वेयर इट, बट नाउ आई एम टेलिंग माय फ्रेंड दैट आई फॉरगॉट टू वेयर अ हैट, बट ही डिड नॉट नो दैट आई वाज हैविंग अ हैट। सो फिर हमारे पास इम्पेरेटिव है, डू नॉट टच दैट, इट्स डेंजरस। हमारे पास बहुत सारे बिलबोर्ड्स पे ये लिखा होता है, सो इट इज़ अ कमांड। एंड रिक्वेस्ट ये हो सकता है कि वुड यू माइंड शटिंग द डोर, तो इट्स अ रिक्वेस्ट। इंट्रोगेटिव में व्हाट आर यू वेयरिंग, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी इंट्रोगेटिव में आ सकते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी, आई हैव ऑलरेडी मेड यू पीपल अंडरस्टैंड इट, हरी अप वी आर गेटिंग लेट, तो हरी अप हमारा एक सेंस ऑफ फीलिंग है। तो this was all about my video. Thank you so much for watching. Like, subscribe and share my channel as much as you can. I'll meet you guys in the next video. Until then, Allah Hafiz.